तुमको कन्फर्म बताते हैं 10 बजे।
Hello. Beta, can you hear me? Good evening. Good evening to all, beta. Guys, can you hear me? Good evening, sir. Okay. So, so beta, let's start. Okay. So today we will start with a very interesting topic of the fundamental calculus, and this topic is fractional part function. So this is very important topic of the chapter function, and this topic is called fractional part function. Okay, this topic is called beta fractional part function, and that this is most important topic of the fundamental calculus of the chapter function. So basically I'm starting from basic, guys. So I already discussed in the last lecture topic called name greatest integer function. So greatest integer function is already done in the last lecture, and today I will start fractional part function. Okay, 1 minute beta. So beta, this is very important topic for the JEE advanced syllabus. Okay, this is very important topic for JEE advanced syllabus. JEE advanced syllabus. This is very important topic. This is very important topic for JEE advanced syllabus. Okay. So basically, beta, one important thing is that, let's say fx is equal to fractional part of x. So beta, this represent fractional part function. Okay, this represent fractional part function. Okay beta, so this represent fractional part function. So what is the property number 1? So beta, property number 1 is that suppose we have a number x. Okay guys, and I already discussed to you ki suppose a number x is always written as what? Integral part plus fractional part. Integral part plus fractional part. Okay beta, so suppose a number x and x is written as integral part plus fractional part. So this is fractional part is written as, this is the beta fractional part. Okay now, this is the fractional part. So finally what we can do here, suppose a number x and x is written as greatest integer function of x. Okay, greatest integer
function of x plus fractional part function of x. Okay. Okay, guys. So, guys, just let me know what is the fractional part of 1.2. But suppose 1.2 is a number and 1.2 is written as 1 plus 0.2. 1 plus 0.2. Okay. 1 plus 0.2. So fractional part of 1.2 is what? Simply beta. Simply what? Answer will be 0.2. Okay. Because I'm not interested to take the integral part. My motto is that to find the fractional part of 1.2 and that is equal to beta 0.2. So guys, I already discussed with you that the range of the fractional part function is what? 0 to 1. Fractional part function, their range will be 0 to 1. So fractional value is always lies between 0 to 1. So I think this is clear to all. Any doubt better? So this is the first property. First property is that suppose a number x and x is written as integral part of x. Matlab what? X should be written as greatest integer of x plus fractional part of x, and the range of the fractional part of x is lies between f for what? Beta f for fractional part of x. So f is what? Fractional part of x, and fractional part of x should always lies between 0 to 1. I think this is clear to all. So let's say suppose a number x and x is written as greatest integer function of x plus fractional part function of x. So basically we have to find what is the value of fractional part of 1.2. So guys, simple that 1.2 is written as 1 plus 0.2. So fractional part of 1.2 is what? Simply 0.2. Okay, this is clear. What is the value of fractional part of 2.7? So suppose beta 2.7 is a number and 2.7 is written as 2 plus 0.7. Got it? So fractional part of 2.7 is equal to simply 2. Is simply 2. Got it? So next is beta fractional part of 3. Fractional part of 3. So fractional part of 3 is written as what? So simple beta what? Suppose 3 is a number and 3 is written as 3 plus 0. So fractional part of 3 is equal to what? Simply 0. Because this is the integral part and this is the beta 0 is also written as 0.0. The fractional part of 3 is what? 0. Because these have no any fractional value. Okay. So I think beta this is clear to all. Any doubt? Let me know beta. That's clear now? Sir, fractional point of 2.7, it is 0.7, right? Yeah, fractional part of 2.7 beta simply 0.7. Okay, yeah, silly mistake. Yeah, the fractional part of 2.7 is beta simply 0.7. Okay. So simple beta fractional part of 4 is what? So 4 is simply beta pure number. Got it now? So fractional part of 4 is beta what? Simply 0. I think beta this is clear to all. Any doubt? So beta, just wait 1 minute. In Olympiad, do you know very well Olympiad beta? So Olympiad, actually one question is coming from what is the value of pi? Fractional part of pi. This is a very interesting question. Beta. 1 second. Okay. Our question is that fractional part of pi. So just tell me beta, what is the value of fractional part of pi?
Just try to solve. 1.14. So is it 0.14? So 0.14, 0.14. सेम ईयर का पेपर है ना, जे एडवांस का पेपर, तो सेम शेड्यूल है ना, सिंपल पेपर है आईआईटी एडवांस। हाँ हाँ, यस बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम बेटा ओलंपियाड। ओके, तो गाइस जस्ट कंसीडर हियर ना, एक्चुअली सिंपल इज दैट कि सर लेट्स से यू हैव टू फाइंड कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई इज इक्वल टू, तो सिंपली बेटा 3.14 डॉट 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 डॉट। ओके, what is the value of this function? So suppose beta fractional, suppose pi is a number and pi is written as greatest integer of pi plus fractional part of pi. Okay beta, got it? So guys, you know very well ki greatest integer of pi, guys just concentrate here, greatest integer of pi. So this is what greatest integer of what, 3.14 dot 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 dot. So greatest integer of 3.14 is simply beta what? Simply 3. Got it now? So greatest integer of pi is what? Simply 3. And this is simply fractional part of pi. Okay. So guys, from here, fractional part of pi is equal to pi minus 3. And that is your answer. So beta, that is very interesting question. बच्चे इसे मिस्टेक कर जाते हैं बेटा, है ना? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि मैं वैल्यू को फाइंड करूं, सो बेटा पॉसिबल नहीं है ना? तो दिस इज बेटा पाई माइनस 3। आई थिंक बेटा दिस इज क्लियर टू ऑल। एनी डाउट? अदिति, माधवन, ऋतुराज, समीता, अच्छा विष्णु, आई थिंक यू आर, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ना विष्णु? यस सर, यस सर। ये तुम्हारा पहला क्लास है ना? हाँ यस सर। समझ में आ रहा है? कौन से हाँ क्लास यस में? यार सर, हम 12th क्लास में हैं, इंटर सेकंड ईयर। अच्छा सेकंड ईयर, समझ पा रहे हो ना? हाँ या सर। एक्चुअली थोड़ा सा yes, कोर्स आगे चला गया बेटा, अपन तुमको हाँ एक्चुअली तुमको कवर कर देंगे मैं, ठीक है ना? एक मेरी बैचेस yes, है ना, एक्चुअली मैं ऑनलाइन बैच पढ़ाता हूँ नारायणा का, ठीक है ना? ओके सर। वो नारायणा का जो चाइना बैच है ना, इन चाइना बैच है ना, यस सर, यस सर। तो इन चाइना बैच में मैं तुमको मैनेज कर दूंगा, वहां पे फंक्शन स्टार्ट होगा ना तो मैं तुमको मैनेज वहां पे कर दूंगा, ठीक है ना? अभी तुम बस थोड़ा सा तुमको तकलीफ होता तो हमसे बात कर लेना, मैं तुमको बता दूं, ठीक है बेटा? नो सर, इट्स ओके, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट, इट्स ओके। ओके ओके। ओके। So guys, what is the value of fractional part of minus 1.2? What is their value? Fractional part of minus 1.2. Just let me know, beta. What is the value of fractional part of minus 1.2? Fractional part of minus 1.2. 0.8। या करेक्ट, वेरी गुड। अरे तू तो बच्चा तेज है रे। हाँ। तो चलो, तो मैं तुम्हारे कारण बड़ा स्लो पर आ रहा था, कैसा ना हो कि तुमको कहीं समझ में ना आए। यस। चलो बेटा, आप तो अब जेई एडवांस लेवल तक करोगे, तो चलो मैं स्टार्ट आगे अब लेवल की चलता हूँ। तो सिंपल देखो बेटा, माइनस 1.2 इज रिटन एज -2 प्लस 0.8, है ना? देखो ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ाया था बेटा, ऑलरेडी डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द लास्ट लेक्चर कि हाउ वी कैन मैनिपुलेट, बिकॉज तुमको मैंने पढ़ाया था बेटा लास्ट क्लास, याद करो गाइस, लास्ट क्लास बेटा, लास्ट क्लास स्टार्ट करो, मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? भूल गया? एक बार देख लो सब इधर। मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि सपोज f(x) इज इक्वल टू
greatest integer of x. Okay, and this represent what? Greatest integer function. Okay, beta. So what? Suppose a number x and x is written as n plus f. N is what? Beta, n is integral part. N is beta integral part. And what is the f? Beta, f is fractional part. F is fractional part. And the f should lies between 0 to 1. That is very important. That is the range of the f. So integral part always belonging to integer. So at this condition, greatest integer function of x is equal to n. Okay, बेटा मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है ना? तो बेटा n प्लस एफ की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो यहाँ पे तो बेटा -1.2 is written as -1 plus 0 -1 minus 0.2. This is already n, but this is already f, but this is minus. So don't satisfy. Condition is that n plus f, and here beta n minus f, not possible. So finally beta answer will be 0.8. I think clear to all. तो बच्चों fractional part function of -2.7 is equal to what? This is beta -3 plus what? 0.3. That is equal to 0.3. Okay. So fractional part of -2 is what? Simply 0. That is clear, beta? Any doubt? Let me know. So beta, one interesting question is coming, beta. Cyber Olympiad. ओलंपियाड में बेटा क्वेश्चन आया था एओडी से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया था, और उसमें यूज किया गया था बेटा -पाई का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. अब बताओ क्या होगा, सोच के बताओ बेटा क्या हो सकता है. सर 3 plus pi, 3 minus pi. अच्छे से सोचो बेटा, अच्छे से सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हड़बड़ी में गलती मत करो बेटा, थोड़ा ढंग से सोचो. ओलंपियाड का बेटा यूजफुल क्वेश्चन है, तो सिंपल तो होगा नहीं. Sir 0.86. Okay, just let's see beta. Guys, a fractional part of -5 is equal to, I think, -3.14 ... Okay, we have to find this value. Suppose -pi is a number and -pi is written as fractional part of -pi plus greatest integer of -pi. Any doubt? Let me know. Okay, so this is -pi and this is a fractional part of -pi. Greatest integer of -pi is what, guys? Greatest integer of -pi is what? -4. Got it? अरे got it ना? पता नहीं क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Got it. Guys, this is clear or not? This is clear now? Yes sir. So here fractional part of -pi is equal to what? 4 minus pi. So this is your answer, beta. This is your answer. समझे बच्चे? Yes sir. Yes sir. Got it. Note it down, beta. Done, beta?
important observation. So beta, some important observation I will discuss here. Okay, 1 second. So beta, important observation is that observation 1. Beta, any real number x can be expressed as a sum of two numbers I and f. Okay, where f is positive factor or 0, and I is an integer. I is an integer. Okay. So beta, I is called integral part. I is called integral part of x and is denoted as denoted as greatest integer of x. Okay, and f is called fractional part of x. Fractional part of x, and is denoted as denoted as what? Simply fractional part of x. Okay bachcho, got it na? Okay beta. So clearly beta, x as number is written as I plus f according to the above information, and you can easily say sir, I is also denoted by greatest integer of x and f is also denoted by fractional part of x. So from here you can easily say that sir, x is equal to greatest integer of x plus fractional part of x. Beta, I think this is clear to all. Any doubt? So beta, this is what? This is beta always integer. This is always integer. This is what? This is beta positive fraction. This is beta positive fraction, or you can say 0. Okay beta, I think beta this is clear to all. Any doubt, let me know beta. So I think beta this information is clear to you. Any doubt? बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No sir, fine. Okay. Just note it down beta.
ओके डन बेटा, कॉपीड। Note number 1. So note 1 is that, sir, greatest integer of x and fractional part of x can be used as integral part and fractional part respectively only when it is defined in the क्वेश्चन। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी बेटा क्वेश्चन में आपको ऐसा मान लो एज सच बेटा, मानो कि कोई क्वेश्चन है, समथिंग इज गिवन इन द गिवन क्वेश्चन, तो बेटा इसके अंदर ना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि यूज होता है ना, तो आपको यहाँ पे रिटन होगा, गिवन होगा कि दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बेटा ये मेंशन होगा, यदि ये मेंशन नहीं होगा ना बेटा, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये GIF है। यदि मेंशन है तभी ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, अदरवाइज इट्स बिहेव लाइक एज द ब्रैकेट्स। ओके, तो एनी टाइम यदि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दिस शेप रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस शेप रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बेटा एक बहुत कंफ्यूजन एरिया है, तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एक कंफ्यूजनल एरिया है, इसको बेटा याद रखना, ठीक है, इसको बेटा याद रखना, ठीक है बेटा। तो बेटा सवाल में यदि गिवन होगा तभी आपको समझना है, अदरवाइज अपने मन से दिमाग मत लगाना, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट कंडीशन, नोट नंबर 2। एक बात, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x can be treated as distance between x and greatest integer of x on number line, hence cannot be negative, So fundamentally I'll just take her first example. So बेटा after completion of function ना बेटा एक बुक है बेटा, ब्लैक बुक, जानते हो क्या आप लोग? ब्लैक बुक विकास गुप्ता का, आप लोग को पता है बेटा?
डू यू नो समथिंग अबाउट ब्लैक बुक बाय विकास गुप्ता? आइडिया है आप लोग इस बुक के बारे में? नो सर। सो बेटा प्रॉपर जे एडवांस का बुक आता है, फुल कंप्लीटली जे एडवांस या ओलंपियाड के लिए बुक आता है। तो हम बेटा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फंक्शन इस बुक से डिस्कशन करेंगे, है ना। और एक बेटा एक्चुअली आई ए मैरून, नाम सुनो, आई ए मैरून बुक आता है कैलकुलस का, आई ए मैरून। और उसके बाद बेटा आई ए मैरून ले लो, या तो हम जो बेटा पैकेज देते हैं फिटजी का, जो फिटजी का पैकेज है ना, जीएमपी ग्रैंड मास्टर पैकेज, हम लोग इससे डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा, जीएमपी से। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर आई विल गाइड यू हाउ टू टेकल द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अभी देख लो, तो सपोज करो बेटा यहाँ पे अपन लिख दिए x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मान लो कि बेटा 50.2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? 50 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2 होगा। नेक्स्ट, फिफ्टी 3.7 है, तो इसका बेटा ग्रेटेस्ट फंक्शन 53 0.7। एज ऑफ सिंपल दैट कि -13.8, तो दिस इज बेटा सिंपली -14 and this is better simply I think 0.2, okay, 0.2. Next is -17.32, -18, I think 0.68. I already discussed with you, if fractional part cannot be negative, very important बात, ठीक है बेटा। हर एक बात में लिख दियो बेटा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो 5 है बेटा, तो सिंपली -7, तो पाई तो मैंने बता ही दिया बेटा, पाई क्या क्या होगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे पाई -3। अच्छा तुम बताओ ई के बारे में, माइनस ई बताओ, माइनस ई का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा? माइनस ई का व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ माइनस ई? जीरो 0.29। बेटा ये भी बेटा एक क्वेश्चन जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, पाई पाई माइनस ई वाला आया था आपका, एक नाम सुनो बेटा, एक एग्जाम में बेटा, आई आई IISc, नाम सुनो, IISc बैंगलोर, जानते हो क्या IISc बैंगलोर? किसी को पता है बेटा? IISc कॉलेज है बैंगलोर में, IISc बैंगलोर, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता आप लोग को? तो माइनस ई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बेटा -3 होगा, और इसका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होगा बेटा 3 - e, ओके।
क्या होगा 3 माइनस ई। ओके बेटा 3 माइनस ई, गॉट इट बेटा, समझ में आया सबको? तो फंडामेंटली बेटा ये चीज आप याद रखें। चलो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन है बेटा कि फ्रॉम डेफिनेशन, आपको बेटा पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच का होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। एनी डाउट? मतलब यू कैन से दैट इज range of fractional part function, that is range of fractional part function means y belongs to closed 0 to beta 1। हाँ यस बेटा, नहीं सर कुछ नहीं सर। closed 0 to beta 1 open। okay, okay beta, so we just come on the property number 2, property 2 guys, do you know very well कि sir x should lies between 0 to 1। let's suppose x should lies between, अच्छा बेटा एक बात और देखो, छोटा सा बात, एक बात और देखना बेटा, बेटा एक छोटा सा बात यहाँ पे और देखो बेटा, एक छोटा सा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यहाँ देख लो, इसको यहाँ देता हूँ, यहाँ पे हाँ एलन का है ना यार, सेम ब्रांच का होगा यार, आईआईटी एडवांस के एग्जाम की बात करें तो रिजल्ट है दोनों साथ में आया था रिजल्ट। एलन वाली क्लास में यदि कल मेरा आएगा ना, एलन डीएलपी मेरा क्लास 3:30 बजे से। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स will be equals to x if x is itself an integer, x is itself an integer, or it will be an integer, just on LHS of x, so beta that is very not an important property but slightly simple, I think you can understand here, no need of any explanation, ये simple property है जो आपको पता होगा। खैर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलो या तो fractional part of x should lies between 0 to 1। so at this condition fractional part of x is what?
simply x. Got it or not? This is clear beta? अरे this is clear ना? This is clear? Any doubt? Any doubt beta? Nice, sir. Got it? Yes, sir. अच्छा, अब इसको ऐसे समझो. Let's consider x जो है ना बेटा 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है. तो मान लो कि बेटा x बराबर मैंने 1.2 लिया, तो तुमको पता है कि 1.2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा बेटा वो क्या होगा? 0.2 होगा. अरे होगा ना? मतलब क्या? मतलब है कि बेटा 1.2 माइनस 1. अरे क्लियर है? सपोज करो कि x कोई नंबर है, उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो लिख ही सकते हैं. अब तुमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बेटा ये जो होने वाला है पूरा क्वांटिटी, ये तो हमेशा 1 होने वाला है. अरे होने वाला है ना बेटा? अरे तुमको पता है ना कि जब x 1 से लेके 2 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? हमेशा 1 होता है. अरे पता है ना, पढ़ाया था ना मैंने. यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 1 हो जाएगा. एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? ओके क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. अरे क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Let's suppose that is the observation 1. That is the observation. ठीक है. Observation 2 देखो guys. Observation 2 मतलब क्या? सपोज करो कि x जो है ना 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लो. तुमने मानो कि 2.3 लिया, तो 2.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा बेटा वो क्या होगा? 0.3 होगा. अब सपोज करो कि x कोई नंबर है जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं. और तुम मुझे बताओ कि बेटा यदि x 2 से लेके 3 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बेटा ऑलवेज 2 होगा. अरे होगा ना? ऑलवेज 2 होगा. अरे कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? तो No, sir. No, sir. x क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से x माइनस 2 हो जाएगा. अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बताओ. क्लियर है? Yes, sir. यहां से तुम ऑब्जर्वेशन 3 देखो बेटा. ऑब्जर्वेशन 3 देखो. ऑब्जर्वेशन 3 क्या होगा बेटा? ऑब्जर्वेशन 3 ऐसा है बेटा कि सपोज करो कि ग्राफ आपका x 3 से लेकर 4 के बीच में बेटा. तो सपोज करो 3 से लेकर 4 के बीच में 3.4 आपने लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.4 इज ऑलवेज व्हाट? 0.4. अब सपोज करो कि x कोई नंबर है, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब x जो है 3 से लेकर 4 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा. अरे होगा ना? यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x माइनस 3 होगा. अब मैं फाइनली ऑब्जर्व करो बेटा, मैं फाइनली बोलूं कि सपोज करो कि x जो है, सपोज करो कि x जो है n से लेके n+1 के बीच में लाई कर रहा है, और मान लो कि n एक इंटीजर है. तुमको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था कि बेटा दुनिया का कोई भी नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अरे देखो बेटा, सपोज करो कि x जो है n से लेके n+1 के बीच में, तुमको मैंने पहले पढ़ाया था x को बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं. अब बेटा n से लेके n+1 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? ऐसा n होगा बेटा. x बराबर क्या होगा बेटा? n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस n. तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? जबरदस्त. मैं तुमको यहाँ से एक्सप्लेनेशन दिया बेटा. इसका जो बेटा ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो बेटा, ग्राफ देखो. बेटा ऑब्जर्व करो
एक चीज बेटा ऑब्जर्व करोगे, दैट इज द वाई एक्सिस, दैट इज द एक्स एक्सिस, और दैट इज द बेटा 0, दैट इज 1, दैट इज 2, 1 2 3 -1 -2। अब सपोज करो बेटा कि आपका ग्राफ 1 से लेकर 2 के बीच में था, आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आया, x -1 आया। तो x -1 का बेटा ग्राफ क्या होगा, x -1 का बेटा ग्राफ ऐसे होगा। क्लियर है बेटा, और इंटीजर पे डिफाइन नहीं होगा बेटा। सपोज करो कि आपका 2 से लेकर 3 के बीच में था, तब ग्राफ क्या आया बेटा, x -2 आया। x -2 का बेटा ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। फिर बेटा इंटीजर पे डिफाइन नहीं होगा। सपोज करो बेटा कि 3 से लेकर 4 के बीच में था, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया बेटा, x -3 आया। तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, ऐसा होगा। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। सिमिलरली -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होगा। ठीक है बेटा, सपोज करो कुछ ग्राफ बेटा ऐसा हो, बेटा दिस इज द ग्राफ ऑफ योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बेटा ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। तो बेटा याद करने वाली बात पहली कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 से लेके बेटा 1 के बीच में होगा। और एक नया बात, ये बेटा जो ग्राफ देखो, ये ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन है, ये ग्राफ लगातार सेम शेप में रिपीट हो रहा है। तो दिस इज बेटा पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज बेटा पीरियोडिक फंक्शन देयर टी, मतलब टी मतलब बेटा फंडामेंटल पीरियड इज 1 यूनिट। बेटा टी फॉर फंडामेंटल पीरियड, टी फॉर बेटा फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड विल बी 1 यूनिट। तो फाइनली बेटा आपका ग्राफ देखो, तो फाइनली देखो बेटा लास्ट में क्या मुझे मिला था, x -n। देखो फाइनली क्या मिला था मुझे, x -n, मतलब पूरे इंटीजर तक ग्राफ बेटा ऐसे ही बनता चला जाए। तो देखो जब तुमको पूरा पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्राफ आया कैसे, ग्राफ मिला कैसे, हर एक बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। आई थिंक तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगा बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बेटा क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? अदिति, माधवन, शमिता, विष्णु, यस सर, नितिन, यस सर। Yes, sir. तो ग्राफ तो क्लियर हो गया बेटा। चलो अब अपन आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर बेटा 3। प्रॉपर्टी 3 भी बोलता है बेटा कि x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। जैसे 0.2 का आपको फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, तो 0.2 का बेटा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2 ही होगा। ठीक है, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो बेटा ये भी क्या होगा, 0.2 होगा। 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ये भी क्या होगा बेटा, 0.2 होगा। अच्छा तुमको बोल दे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, बताओ। तो दिस इज सिंपली बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा तुमसे कोई पूछे कि x -5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, दिस इज सिंपली बेटा, सिंपली व्हाट, दिस इज व्हाट, टेल मी, सिंपली x, सिंपली बेटा x। ओके, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. यहाँ देखो बेटा, ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये तुमको समझ में आ गया ना बेटा? ये ग्राफ तो बेटा क्लियर होगा, ये ग्राफ क्लियर है बेटा? Yes, sir.
इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, अच्छा है। तो ये बेटा किसका ग्राफ है? ये बेटा ग्राफ है y बराबर x का। कब? जब ग्राफ बेटा 0 से लेके 1 के बीच में होता हो। जब ग्राफ 1 से लेके 2 के बीच में हो बेटा, तो किसका ग्राफ है बेटा? y बराबर x माइनस 1 का। एक किसका ग्राफ बेटा? y बराबर x माइनस 2 का। ये 0 से लेके -1, ये किसका ग्राफ है बेटा? y बराबर x प्लस 1 का। एक किसका ग्राफ है बेटा? y बराबर x प्लस 2 का। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो आई थिंक गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल। एनी डाउट लेट मी नो। बेटा क्लियर है ना? यस सर। इंटीजर्स के ऊपर बेटा ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, पता है ना? यहाँ पे बेटा ये जो है ना इंटीजर्स, इस पे बेटा ग्राफ क्या है बेटा डिफाइन नहीं होगा। थोड़ा सा इसको मेकअप वगैरह कर दो, मेकअप करने के बाद अच्छा लगता है बेटा। चलो, तो बेटा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, आगे चले बेटा? चलो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बेटा। चलो आज की बेटा इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर। चलो, तो आज की बेटा इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? ठीक है, Yes, sir. अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। बेटा पता है जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया? अरे पता है ना? हाँ सर। कुछ पता चला कि नहीं चला तुम लोग को? चैतन्य Yes, का sir. है ना शायद AR1। हाँ, अब तुमको कुछ दिखाते हैं, देखो थोड़ा सा तुम भी। अभी जैसे एक चीज और है बेटा कि श्री चैतन्य ने रैंक 1 दिया, तो अच्छी बात है बेटा, रैंक 1 श्री चैतन्य ने दिया है, अच्छा है, देना चाहिए। बच्चा मेहनत करता है तो रैंक 1 तो आना ही पड़ेगा, बच्चा ही लाएगा बेटा। देखो बेटा इस बार जो पेपर हुआ था ना, तो तुम्हें क्लियरली बताओ, मैंने तो सॉल्यूशन भी दिया, देखो एलएन के चैनल पे देखना, मेरा सॉल्यूशन बहुत जल्दी मैंने दिया था सॉल्यूशन। तो मतलब कहने का देखो बेटा मतलब है कि बच्चे तो मेहनत कर ही रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं बच्चे। तो अभी तुमको बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग अपना। तो देखो हम जो बैच पढ़ा रहे थे ना बेटा, आवाज आ रहा है सबको? यस Sir, yes. तो देखो हम जो क्लास बैच ले रहे थे, तो आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन हाँ सर। तो ये मेरे बैच का बेटा देखो, तो मेरे बैच से बेटा ऑल इंडिया रैंक 261 आया, और इस बैच का एकेडमिक हेड मैं ही था। 261। और आपको मैं बताऊं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक बात मैं आपको नहीं बताया था, अभी आप थोड़ा सा एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा भी मतलब क्या बोलते हैं, एक बात था कि अभी थोड़ा सा मैं नारायणा छोड़ दिया था, मतलब इन चाइना बैच। अभी जो बेटा आपका रैंक 1 है ना बेटा, रैंक 1, अभी जो रैंक 1 है, कौन है रैंक 1? भाभीलाल है ना, चिदविलास रेड्डी। ऑफिशियली बेटा इसको बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशंस कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और कैलकुलस का बेटा फंक्शन बेटा मैंने ही पढ़ाया था एन चाइना बैच में। जब मैंने बेटा नारायणा लीव करके जब एलएन में आया था, उसके बाद ये बच्चा एक्चुअली अब तो हम लोग रिजल्ट छाप नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी व्हाट्सएप चैट भी तुमको मैं दिखा सकता हूँ। तो चलो एक्चुअली खैर रिजल्ट तो अच्छा है, अच्छा रिजल्ट बच्चा लाया है, तो खुशी की बात है, खुशी मिलता है कि कोई बच्चा का सिलेक्शन हो जाए। आप लोग भी मेहनत से पढ़ो बेटा, देखो IIT-JEE एडवांस तो तुमको पता है, मतलब IIT-JEE एडवांस तक तो बेटा हम पूरा करा देंगे आपका, और जे एडवांस ही नहीं बेटा ओलंपियाड तक
आप बिंदास रहो, जो भी ओलंपियाड का एग्जाम देना चाहते हो तो वो भी बच्चा बेटा बिंदास रहो, है ना, हम पूरा कवर करेंगे सिलेबस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, बस मुद्दा है कि मेहनत करना है आपको, बस जितना मेहनत करिएगा उतना सिलेक्शन आपका मिलेगा। मेन है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा, विदाउट मेहनत तो कुछ नहीं होता। हम भी पढ़ के आईआईटी गए थे, है ना, हम भी बेटा पढ़ के आईआईटी गए, तो ऐसा नहीं कि हम बिना पढ़े आईआईटी चले गए, भी पढ़ के बेटा आईआईटी गए, ठीक है। हम भी जब बीटेक किए हैं तो बेटा पढ़ के ही किए हैं बीटेक, तो मेरे पास ही कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और आपके पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मैं भी पढ़ के गया था, है ना। तो बस वन वन थिंग इज रिक्वायर्ड कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा आज के इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।